नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. राहुल गांधीच्या अमेरिका दौऱ्यात कंदिश श्रीनिवास रेड्डी. KSR यांनी काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्याचा गौरव. दशाब्दी उत्सव यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हाती घ्यायच्या कार्यक्रमाबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश. अम्मा न्यूजच्या लेखाला प्रतिसाद. बसस्थानकावरील पार्किंग व्यवस्थेवर अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित. आजच्या सविस्तर बातम्या. आदिलाबादचे काँग्रेस नेते कंदिश श्रीनिवास रेड्डी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात सहभागी झाले होते. राहुल गांधी यांनी सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये अनिवासी भारतीयाची भेट घेतली. इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष मोहिंदर सिंग, TPCC प्रसार समितीचे अध्यक्ष मधुयाष्की गौड, काँग्रेसचे युवा नेते NRI कंदिश श्रीनिवास रेड्डी आणि मोठ्या संख्येने अनिवासी भारतीय या बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर कंदिश श्रीनिवास रेड्डी यांनी राहुल गांधी यांचा सत्कार केला. जिल्हाधिकारी राहुल राज म्हणाले की समन्वयाने दशक साजरे केले पाहिजे. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात तेलंगणा राज्य अवतार दशक महोत्सवाच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेण्यात आली. विभागनीय कार्यक्रम हाती घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यात 2 ते 22 जून या कालावधीत होणाऱ्या 21 दिवसीय राज्य अवतार दशब्दी सोहळ्याची भव्य व्यवस्था करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सहभागी होऊन दैनंदिन कार्यक्रम यशस्वी करावेत. विकास आणि कल्याणकारी कार्यक्रमाच्या प्रगतीवर चर्चा झाली. विभागनीय वाटप केलेल्या निधीची माहिती दिली. అందరికి ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది. మొత్తం అందరూ హాస్పిటల్ పోయి జాయిన్ అయ్యింది. ఒక్కొక్క MR ఆఫీస్ కి 5000, MPD ఆఫీస్ కి 5000 రిలీజ్ చేస్తారు. సో అది కూడా ఈ రోజు 5000 రిలీజ్ చేశారు. అన్ని ఆల్ MR ఆఫీసెస్, ఆల్ MPD ఆఫీసెస్. ఇక్కడైతే RDO ఆఫీస్ కలెక్టరేట్ ఉంది, అక్కడ పుత్తూరు RDO ఆఫీస్. సో అది 5000 రిలీజ్ చేశారు. సో అవి సీరియల్ గా కొనేసేసి 21 days కి కూడా అవి మొత్తం కూడా సీరియల్ గా MR MPD ఆఫీసెస్ కి పెట్టేసేయండి. సో అది మొత్తం మనకి దీని అయిపోతుంది. సో ఈరోజు పంచాయత్ సెక్రటరీ మీరు పిలుచుకొని ఎవరెవరు పంచాయత్ సెక్రటరీ పిలుస్తారో కూడా ఒకసారి మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి. దాని ప్రకారము పిలిచేసి వాళ్ళందరికీ क्लिअर इन्स्ट्रक्शन्स इच्छेसेయండి. मुलांना विकणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. या प्रकरणाशी संबंधित 9 जणांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली. मुलांना ICDS अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आणि त्यांच्या देखरेखीसाठी त्यांना अनाथ आश्रमात हलवण्यात आले. SP उदय कुमार रेड्डी यांनी आदिलाबाद ग्रामीण पोलीस ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषद या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती उघड केली. बंगारगुडा येथील गंगाधरची पत्नी राधा हिचा वर्षभरापूर्वी 2 मुलांना जन्म दिल्यानंतर मृत्यू झाला. त्याआधी त्यांना 3 मुली होत्या, पण आर्थिक साधनाअभावी त्यांना उदरनिर्वाह करता आला नाही. एका RMP डॉक्टरने निपुत्रिक जोडप्याला शोधून काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि एका मध्यस्थाच्या मदतीने ही जुळी मुले कर्नाटकातील लोकांना विकली. मुलांच्या वडिलांनी 3 लाख रुपये गंगाधरला दिले. ही घटना उशिरा उघडकीस आल्याने पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. SPच्या आदेशानुसार विशेष पथक तयार करून तपास तीव्र करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास करून 9 जणांना अटक करण्यात आली. मुलांना ICDS अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आले. ఇక్కడి నుంచి ఒక ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని అమ్మితే వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసి కర్ణాటక నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. యాక్చువల్గా దీంట్లో స్టోరీ ఏంటంటే 10 months బ్యాక్ ఇక్కడ బంగారుగూడలో ఒక రాధ అనే ఈ గంగాధర్ భార్య డెలివరీ అయింది. ఇంట్లో డెలివరీ అయితే 2 కవల పిల్లలు పుట్టారు, ఆడపిల్లలు. పుట్టిన తర్వాత ఆమెకు అనారోగ్యంతో చనిపోయింది. అయితే అంతకుముందే వాళ్ళకి 3 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఆయన తండ్రికి సాదే స్తోమత లేదు. ఈ క్రమంలో అదే ఏరియాలో ఒక RMP డాక్టర్, తర్వాత ఒక షారుఖ్ అనే RMP డాక్టర్ ఫ్రెండ్ షారుఖ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు.
ఇంతకుముందు ఎప్పుడో 2-3 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారట, ఇక్కడ కర్ణాటకలో చాలామందికి పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు ఎవరైనా అక్కడ బాగా పూర్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటే వీళ్ళ పైసలు ఇచ్చి సాదుకోవడానికి వాళ్ళు కొనుక్కుంటారని చెప్పారట. చెప్తే ఆ మాటలు విని ఈ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఏం చేసిందంటే ఈ షారూక్ అనేవాడికి చెప్పిండు. అక్కడ వాళ్ళ సిస్టర్ తోటి, ఏదైతే ఈ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ జగన్నాథ్ వాళ్ళ సిస్టర్తో మాట్లాడి వాళ్ళందరినీ కూడా 8 months బ్యాక్ ఒక కారులో కర్ణాటక తీసిపోయారు. కర్ణాటక తీసిపోయి పోతే వీళ్ళ తండ్రికి అప్పుడు అక్కడ 3 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొని అక్కడ లోకల్లో, అది కర్ణాటకలో ఒకటి గజానంద్ బాల బల్గి ఇది అనే ఆమెకి, తర్వాత కుంట కార్వ వద్ద అది వాళ్ళ ఊరది, తర్వాత ఇంకోటి రాజ్ కుమార్ దొడ్డ గరియప్ప ఇది బక్కసాగర్, ఈ డిఫరెంట్ విలేజెస్లో వీళ్ళిద్దరిని కూడా अక్కడ अम्मडम జరిగింది। विश्वकर्मा आणि विश्व ब्राह्मण स्वाभिमान यांची भव्य जाहीर सभा यशस्वी करण्यासाठी त्या समाजाच्या नेत्यांनी सांगितले। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील प्रेस क्लब येथे खुल्या सभेच्या भिंतीपत्रकाचे अनावरण करण्यात आले। विश्वकर्मा यांच्या स्वाभिमानासाठी, विकासासाठी, कल्याणासाठी आणि राजकीय सहभागासाठी 6 जून रोजी नगरमध्ये एका खाजगी सभागृहात आयोजित केलेल्या सभेत मोठ्या संख्येने लोक यावे आणि त्यांनी विजयाची घोषणा करावी। तेलंगणाचे पहिले विधानसभेचे अध्यक्ष मधुसूदन चारी यांच्यासह सिनेमा ॲक्टर्स आणि अनेक सेलिब्रिटी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे। जून 6వ తారీఖు గాయత్రి గార్డెన్ ఆదిలాబాద్లో తలబెట్టినటువంటి విశ్వకర్మ విశ్వ బ్రాహ్మణుల ఆత్మగౌరవ భారీ బహిరంగ సభ ఇవాళ దాదాపు 10 నుంచి 20 వేల మందితోటి నిర్వహిస్తున్నటువంటి సభను విజయవంతం చేయండి। ప్రతి విశ్వకర్మ మీ ఇంటికి తాళాలు వేసి విశ్వకర్మ భగవానుంది పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఒక పండుగ ఒక యజ్ఞం ఉన్నదని చెప్పేసి అనుకొని మనసులో ఉద్యమ స్ఫూర్తితో అందరూ కూడా హాజరై ఈ సభను మనం విజయవంతం చేసినట్టయితేనే నిజంగా మన మనుగడను మన ఆత్మగౌరవాన్ని మనం నిలబెట్టుకున్నోళ్ళమైతం। आदिलाबाद शहरातील महालक्ष्मीवाडा येथे हनुमानाची भव्य मूर्ती स्थापनेचा कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात पार पडला। वैदिक विद्वानाच्या वैदिक मंत्रांनी आणि विशेष पूजा कार्यक्रमामध्ये मूर्ती स्थापनेचा उत्सव डोळ्यांची मेजवानी होता। वसाहतवाल्यांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन हा प्रसंग आपल्या डोळ्यांनी पाहिला। जय श्रीराम जय हनुमानाच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेले, अध्यात्म उत्पन्न झाले। जय श्रीराम जय श्रीराम अभी वन्यो तपसस्तवीयास्मि भवेद्यर्वाङ्मृति जैनः सहुरे विश्वदायः वन्यो। जय श्रीराम మొదటగా కలశంలోని జలాలను ప్రోక్షించాలి। జై हिरवळ वाढण्याच्या उद्देशाने महानगरपालिका हद्दीत स्थापन करण्यात आलेली नागरी निसर्ग वने दृश्यमान आहेत। अधिकाऱ्यांच्या देखरेखी अभावी सर्व झाडे सुकून कुजत आहे। उन्हाळी हंगाम असल्याने त्यांना 2 वेळा पाणी दिले जात नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे। यातून शासनाचे उद्दिष्ट जे आहे ते पाण्यात धुळीला मिळत आहे। आदी शहरात अनेक ठिकाणी त्यांचे व्यवस्थापन अनागोंदीचे झाले आहे। काही ठिकाणी तर नुकत्याच झालेल्या पावसाने झाडांना संजीवनी दिली जात आहे। आता तरी अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला जाऊन शहरात नैसर्गिक जंगलावर विशेष लक्ष देऊन वनस्पतींचे संरक्षण करण्यासाठी मागणी होत आहे।
अधिकाऱ्यांचा अम्मा न्यूजला प्रतिसाद. त्यांनी मैदानात उतरून युद्ध पातळीवर कारवाई केली. आरटीसी बसस्थानकावरील पार्किंग व्यवस्था अस्ताव्यस्त असून बाहेरून येणाऱ्या वाहनामुळे वारंवार अपघात होत असल्याची एक बातमी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अम्मा न्यूजमध्ये देण्यात आली. त्याला प्रतिसाद देत आरटीसीच्या अधिकाऱ्यांनी बाहेरून वाहने येऊ नये यासाठी डेपोजवळ चेकपोस्ट उभारले आहे. असे असतानाही दुचाकी स्वार भर धाव वेगाने जात आहे आणि बसस्थानकाच्या आवारात 8 वाटे वाहने उभी केल्यास त्यांचे फोटो काढून दंड आकारला जात आहे. एकूणच अधिकाऱ्यांच्या या हालचालीवर प्रवाशांमधून आनंद व्यक्त होत आहे. सर्व लोक सुखी राहावे आणि चांगली पीक भरभराट यावी यासाठी पोच्चम्मा आईला पाणी टाकण्यात आले. आदिलाबाद शहरातील कैलासनगर पोच्चम्मा मंदिरात पोच्चम्मा जलाभिषेक करण्यात आला. येत्या जून महिन्यात पाऊस पडावा आणि भरभराट पीक यावे यासाठी पोच्चम्माजवळ प्रार्थना करण्यात आली. दिल्लीतील ब्रह्मकुमारी प्रतिनिधी गटाच्या सदस्यांनी सांगितले की राजयोगाने तणावावर मात करता येते आणि मानसिक समस्यांमधून बाहेर पडण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे. आदिलाबाद शहरातील ईश्वरीय ब्रह्मकुमारीस ओम शांती निलयम येथे ओम शांतीच्या व्यवस्थापक रेवती दीदी यांच्या समवेत आयोजित पत्रकार परिषद ते बोलत होते. योगासने तुम्हाला निरोगी राहण्यास आणि मानसिक तणावापासून मुक्त होण्यास मदत करू शकतात असे सुचवण्यात आले आहे. येत्या 1 जून पासून ट्रेस क्लासेस घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांचा योग्य वापर करण्यास त्यांनी सांगितले. स्टेट से कुछ यूथ आए हैं आपके आदिलाबाद क्षेत्र के अंदर. यहाँ पर हम जगह जगह गांव-गांव में या आपका पार्क में अलग अलग प्लेसेस पे लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हम लोग राजयोग मेडिटेशन के थ्रू स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, सदा खुश कैसे रह सकते हैं और अपने मन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. आज की डेट में जैसे माना भी गया है, साइंस भी कहती है कि 85% से ज़्यादा बीमारियां मेंटल डिसऑर्डर के कारण होती है, मानसिक रूप से होती हैं. तो मन को कैसे कंट्रोल किया जा सके राजयोग मेडिटेशन के थ्रू, ये हम बताते हैं. और कल जो है स्पेशली हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है यूथ के लिए अपने यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर 10 AM to 11 AM. उसके अंदर यूथ को हम ये बताएंगे कि कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकें हम लोग. आजकल देखा जाता है यूथ को बहुत स्ट्रेस रहता है, वो अपने एम से कई बार भटक जाता है, उसको लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है. तो कैसे हम लोग अपने मन को कंट्रोल करके अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें उसके बारे में, एंगर मैनेजमेंट हो गया, उसके बारे में भी कुछ टिप्स हम लोग बताएंगे.
जैनत मंडळाच्या मुक्तापूर गावात नव्याने बांधलेल्या मंदिरात बुधवारी ग्रामस्थांनी दत्तात्रय स्वामीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना सोहळा मोठ्या थाटामाटात आयोजित केला। वैदिक विद्वान गिम्मा रेणुका एल्लम्मा स्वामी यांनी विशेष पूजा करून दत्तात्रय स्वामी, गणेश, अन्नपूर्णा माता यांची प्रतिष्ठापना केली। मागील 2 दिवसांपासून मंदिरात लक्ष्मी गणपती होमम, सरस्वती होमम, अंकुरार्पण, अग्निप्रतिष्ठा, महागणपती होमचे आयोजन करण्यात आले। भाविकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी करून भगवंताचे दर्शन केले आणि अन्नदानही तिथे झाले। కాబట్టి అన్నదానం కొరకు ఈ యొక్క ముక్తాపూర్ గ్రామం మండల్ జైనత్ జిల్లా ఆదిలాబాద్ గల ఈ ముక్తాపూర్ గ్రామం ఒక మారుమూల పల్లెలో ఈ భక్త మహాశైలందరూ గ్రామస్తులందరూ కూడా ఈ గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా ఈ గ్రామానికి నేను ఒక ప్రవచనాన్ని చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు దత్తాత్రేయుడి మందిరాన్ని నిర్మించడం బిడ్డ అని చెప్పేసి అనగానే గ్రామ పెద్దలందరూ అమ్మలు పెద్దలు చిన్న వాళ్ళందరూ కూడా లేచి చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళు ఆలస్యం చేయకుండా ఒక 2 దాతలు కలిసి ఇక్కడ సంతు అని నగేష్ భూమేష్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఇక్కడ ఒక కోనె బిగడు భూమి అనేది దత్తాత్రేయుడికి సమర్పణ చేశారు। మరి గ్రామస్తులందరూ కూడా ఈ మందిరం నిర్మించడానికి మరి డబ్బులు కావాలి అంటే అందరూ కూడా దత్తాత్రేయుడి మాలలు ధరించి నిద్రలు లేకుండా వాళ్ళ పనులను విడిచిపెట్టేసి గ్రామాలు తిరిగి చాలా చక్కగా మరి భిక్షాటన చేసి మందిరాన్ని నిర్మించారు। महाराणी अहिल्या होळकर यांची 298वी जयंती त्या समाजातील सदस्यांनी बेला मंडळ केंद्रात मोठ्या उत्सवात साजरी केली। सर्वप्रथम महाराणी अहिल्या यांच्या प्रतिमेला आदरांजली अर्पण करून ध्वजारोहण करण्यात आले। यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष म्हणाले की मराठ्यांची सत्ता असलेल्या माळवा साम्राज्यातील होळकर कुळातील राणी राजमाता अहल्याबाई यांचा जन्म महाराष्ट्रातील अहमदनगर भागातील चोंडी गावात झाला। ते म्हणाले की त्यांच्या कारभारात हिंदू धार्मिक उपक्रम आणि धर्मदाय कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी त्या ओळखल्या जातात। नाशिक, गया, वैद्यनाथ मंदिर आदी ठिकाणी धर्मशाळा बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे। प्रत्येकाने त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकले पाहिजे असेही ते म्हणाले। आज 31 मे 2023 या दिवशी अहिल्यादेवी होळकर यांची 298वी जयंती साजरी करण्यात येत आहे। अहिल्यादेवी होळकर ही फक्त धनगर समाजाची नव्हती तर सर्व समाजासाठी त्यांनी काम केलेलं आहे। जसं काशी विश्वनाथ यांच्या मंदिराचं पुनरुद्धार, इतर काही जे सामाजिक कार्य आहे ते अहिल्यादेवी होळकर यांनी केलेलं आहे। तरी सर्व समाज बांधव इथं आज उपस्थित राहिले आहे। अहिल्यादेवी होळकर एक विधवा राणी राहून सुद्धा त्यांनी स्वतःच्या परिक्रमाने स्वतःचं राज्य निर्माण केलं आणि स्वतःचं राज्य कसं चालवायचं, राजकीयदृष्ट्या आणि लोकशाहीदृष्ट्या कसं चालवायचं हे त्यांनी जगाला दाखवून दिलं। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। राहुल गांधीच्या अमेरिका दौऱ्यात कंदी श्रीनिवास रेड्डी, KSR यांनी काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्याचा गौरव। दशाब्दी उत्सव यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हाती घ्यायच्या कार्यक्रमाबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश। अम्मा न्यूजच्या लेखाला प्रतिसाद, बसस्थानकावरील पार्किंग व्यवस्थेवर अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।